Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. Welcome to class 6. Today is our science class. Students, open your books. Come on the unit number 3. The name of the unit is Sensitivity in Living Organism. Let's have a reading. Sensitivity in living organism. All living organisms are sensitive to changes inside and outside their bodies. Animals respond to changes in their environment by moving elsewhere. Plants respond to changes in their surrounding by moving their parts. In some simple unicellular organisms such as amoeba, Chlamydomonas and Euglena, the cytoplasm as a whole is sensitive. The eye spots inside Euglena and Chlamydomonas help them to detect changes in light intensity, enabling them to move away from bright light. यानी कि जैसा कि आप देखते हैं कि इन चीज़ें जो हैं वो इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से मूवमेंट की तरफ मूव करती हैं। जैसे अभी इसमें बताया गया, जैसे यूनिसेलुलर कौन से हैं जो कि एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, अमीबा, क्लेमाइडोन, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इनमें एग्जांपल्स भी पिक्चर्स दी गई हैं। सम प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी. फॉर एग्जांपल, द लीव्स ऑफ द ट्राइफोलियम प्लांट ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम. जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, उसकी मूवमेंट सूरज की तरफ होती जाती है। जैसे जिस तरफ सूरज का फेस होगा उस तरफ वो मूव करता जाएगा, और जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती जाएगी वो उसी तरह से उसके लीव्स और जो फ्लावर्स के ऊपर जो भी हैं वो क्लोज होते जाएंगे. सम प्लांट्स आर सेंसिटिव टू टच. फॉर एग्जांपल, द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट टच मी नॉट क्लोज व्हेन टच्ड. Plants do not have sense organs, but they can sense light, water, and the pull of gravity. They respond by growing towards them. The external effect which produces changes in the behavior of an organism is called a stimulus. The reaction of an organism to a stimulus is called a response. The ability of an organism to respond to a stimulus is called a sensitivity. For example, light is a stimulus. The running of the shoot towards light is a response. अब जैसे कह रहे हैं कि जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म को है वो अपने बिहेवियर को शो कर रहा है, वो क्या है, स्टिमुलस है, और जो उसका रिएक्शन है दूसरे जानदार पे वो क्या है, रिस्पॉन्स है. और जो प्लांट या उस एनिमल की एबिलिटी है रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इस कॉल्ड द सेंसिटिविटी. वो एक सेंसिटिविटी कहलाती है. जैसे कि लाइट जो है वो स्टिमुलस है, टर्निंग ऑफ द शूट टुवर्ड्स लाइट जो है वो क्या है, उसका रिस्पॉन्स है. जैसे मैंने भी कहा कि सूरज की जब रोशनी पड़ रही है तो वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव करने से क्या हुआ, वो उसका रिस्पॉन्स हुआ. Sensitivity and movement in plants. Plants are sensitive to light, water, and the pull of gravity. We can see the response in the form of movements called tropism. जैसे जैसे वो मूवमेंट कर रहा है डाउनवर्ड या अपवर्ड की तरफ, वो क्या है, ट्रोपिज्म है. द रिस्पॉन्स और बेंडिंग ऑफ द शूट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड द फोटोट्रोपिज्म. यानी कि लाइट की जो जैसे जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ रही है वो क्या, फोटोट्रोपिज्म है. दिस रिस्पॉन्स इज़ नेसेसरी बिकॉज प्लांट नीड लाइट टू मेक फूड. जैसा कि प्लांट्स हैं उनको ज़रूरत होती है रोशनी की ताकि वो खुराक बना सकें. Now come on the next page. The shoot grows towards the light and the leaves from their upper surface towards it. The bending of growth of the root towards the soil is called the geotropism. अब ज़मीन की तरफ जो उसकी मूवमेंट है वो क्या है, वो geotropism है. The responses of the root and shoot are controlled by a chemical substance called the auxin. ये ऐसा केमिकल है जो कि ऑक्सिन कहलाता है. ऑक्सिन इज मेड इन द सेल्स फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट. ये रूट और शूट के बिल्कुल टिप पर पाया जाता है. ऑक्सिन स्पीड्स अप स्टेम ग्रोथ एंड स्लोज डाउन रूट ग्रोथ. द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिन इज अफेक्टेड बाय लाइट. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ प्लांट फ्रॉम अबव द स्टेम ग्रोज straight. When light comes from one side, the auxin collects on the opposite side. This causes the stem to bend towards light. अब जैसे बताया गया, जैसे कि सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो उसी तरफ से मूवमेंट करी जा रहा है, और सूरज की रोशनी उसको इसलिए ज़रूरी है, लाइट ज़रूरत है कि उसकी मदद से वो ग्रो कर रहा है और वो फूड प्रोड्यूस कर रहा है. If a plant is laid on its side, auxin gathers to the lower half of the stem and root. The growing of the root cells slows down and the root curves downwards. यानी कि जब वो उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, जैसे कि अब पीछे बताया गया सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो उस तरफ मूवमेंट कर रहा है, अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही तो वो क्या, वो डाउनवर्ड जाता जा रहा है. जैसे कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि जब उनके सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो ग्लो कर, यानी कि उनकी पत्तियाँ जब वो खुल जाती हैं, और जब सूरज ग़ुरूब होने जाता है तो वो की पत्तियाँ बंद हो जाती हैं, यानी कि वो क्लोज हो जाते हैं. Sensitivity in animals. Animals need to sense changes in their surrounding to be able to survive in their environment. Animals can detect changes in temperature, pressure, light intensity, and sudden noises, etc. These changes or stimuli can be felt by special organs which make up the sensory system. Simple organisms can perceive only general stimuli such as light or darkness, heat, cold, etc. More developed animals have a highly specialized sensory organ by which they
receive information about their surrounding. They are able to react or respond quickly to these stimulus. जैसे प्लांट्स में ऐसी सेंसिटिविटी पाई जाए, इस तरह से एनिमल्स में भी ये सेंसिटिविटी पाई जाती है, यानी कि टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है या एयर प्रेशर है या लाइट की इंटेंसिटी है तो उसकी वजह से उनके भी सेंसरी ऑर्गन से बहुत से असरात मरतब हो रहे हैं. Now come on the next topic, coordination. All the systems of the body are closely linked and dependent on each other. For example, food consumed is digested in the digestive system, absorbed into the blood, and distributed throughout the body by the circulatory system. These organs work together and their activities are intricately related. When we run or do some strenuous exercise, our body needs more food and oxygen to produce more energy. Our rate of respiration increases automatically and the heartbeat becomes faster. In the same way, at the sight and smell of food, our mouth begins to water. The working together of all the organs and systems of the body is called the coordination. Coordination in the body is brought about by an system, the nervous system and the endocrine system. The nervous system made up of nervous tissue, and the endocrine system is made up of a number of glands which produces chemical substances that circulates in the bloodstream. All the organs of the body work in coordination with each other. This means that they do not do their work at the right time and at the right speed to serve the body as a whole. Without coordination, the whole body would just be a collection of organs. अब जैसे बताया कि जैसे कि अब इंसान के जिस्मानी organ जैसे वो मूवमेंट कर रहे हैं और साथ साथ अगर उनके सेंसरी ऑर्गन्स इस तरह से रिस्पॉन्स ना करें जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में हो रहा है, तो इसकी वजह क्या होगी, जैसे कि ब्रेन जो है वो तमाम मैसेजेस कन्वे करा तमाम बॉडी पार्ट्स को. इसी तरह से अगर ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड सर्कुलेट ना करे पूरी बॉडी में तो ये ऐसे होगा जैसे कि सिर्फ एक बॉडी पार्ट्स रख दिए गए हैं लेकिन उनमें कोई मूवमेंट नहीं है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेक्चर. नाउ वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट 3 क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस यूनिट. Question number 1. How do single-celled organisms respond to changes in their environment? In single-celled organism, the whole cytoplasm is sensitive to changes in the environment. What is sensitivity? The ability of an organism to respond to a stimulus is called the sensitivity. What are tropic movements? The movement of plants towards light and gravity are called tropic movements. Question number 4. How does oxygen control tropic responses in plants? Oxygen is a chemical substance which is made in the cells at the tips of the roots and shoots. Oxygen speeds up the growth in stems and slows down the growth in roots. So dear students, you write down the first 4 question answers of this unit on your notebooks. Read them and also learn. I hope you understand the lesson. If you have any confusion, you can contact on the school official number. I say Allah Hafiz to all of you.